Okay, profit and loss. I'm going to talk about a few terms here. Siddharth, please on your cam. The first term here is cost price. Cost price is the amount for which an article is bought. If you buy an article for certain price, that is the cost price. If you buy an article for certain price, that becomes the cost price. Selling price. If you sell the article for certain time price, it is known as selling price. So for uh, this particular chapter, you have to pretend as a shopkeeper. Okay, you have to be a shopkeeper. शॉपकीपर क्या करता है? आर्टिकल्स खरीदता है और फिर उसको बेचता है. तो जिस प्राइस में वो आर्टिकल खरीदता है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, एंड द प्राइस एट विच ही सेल्स द आर्टिकल्स, इट्स द सेलिंग प्राइस. जनरली शॉपकीपर का जो आइडिया है वो क्या है पता है? इट इज कॉमर्स. कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग, ट्रांजैक्शंस. और ट्रांजैक्शन के पीछे सबसे बड़ा जो की पॉइंट होता है, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है. तो शॉपकीपर का आइडिया क्या है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट कब होगा? जब वो कम प्राइस की चीज ज्यादा प्राइस में बेचेगा. मतलब when selling price will be greater than the cost price. Always remember, for profit selling price should be always greater than cost price. अगर शॉपकीपर एक चीज खरीदता है 100 रुपीज में, he will try to sell it for 200, 150, 300, whatever. Greater than 100 is fine. Smaller than 100 is not fine. ठीक है. So gain or profit, the first formula for you today, profit is equal to SP minus CP. ये प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज गेन. We also call the profit as gain. Okay, gain or profit is equal to SP minus CP. Loss. Loss तब होता है जब 100 रुपीज में खरीदी गई हुई चीज 100 रुपीज में नहीं बिक रही है और उसको 90, 80, 70 में बेचना पड़ रहा है. When things get old and nobody is buying it, people give discount and they just want to recover as much money as possible from that thing. तो यहाँ पे लॉस होता है. लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं? सीपी माइनस एसपी. क्योंकि लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस से. ठीक है. ये दो बेसिक फॉर्मूले से हमारा पूरा चैप्टर बनता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक फॉर्मूले, these formulae which are given over here, the total, you can say, total of 8 formulae, out of which 6 are mandatory to remember, are very very important. So I'm just going to tell you which are the important ones and which ones you can miss. The first one I told you, profit का formula है. ये loss का formula है. ये profit percent का formula है ना. परसेंटेज का नॉलेज बहुत जरूरी है यहाँ पे. Without the knowledge of percentage na, you cannot do profit and loss. So percentage is profit percent is equal to profit upon CP into 100. CP is cost price. Loss percent is loss upon CP into 100. तो ये profit percent और loss percent का formula हो गया. Why percentage is involved over here is because percentage gives you an overall idea that in particular transactions, however many small transactions are involved, but the bigger picture is given to you by percentage, profit percent or loss percent. In the whole of the day's business, how much profit or loss percent has a company or an individual has made. तो ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट से समझ में आता है. सो परसेंटेज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनफैक्ट दो फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं. सेलिंग प्राइस
और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, selling price is equal to 100 plus profit percent upon 100 into CP, and selling price is also 100 minus loss percent upon 100 into CP. So this is the direct relation if you have been given selling price, cost price and profit percent or loss percent. ये तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग है तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से दैट ये वाले फॉर्मूला है, सीपी के फॉर्मूला है, इट्स द सेम फॉर्मूला बट द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला इज चेंज. सो दिस फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड. हम सिर्फ इतने ही फॉर्मूले से काम चलाएंगे. We are just going to use these 6 formulae in the whole chapter, whole topic of profit and loss. So I want all of you to note down these 6 formulae which I have mentioned over here. Can you please note down? Note it down please quickly. Let's start with some questions. Mohit bought a CD for rupees 750. Now whenever you see these kind of words, bought means he is buying means cost price. Buying always indicates that there is some cost price involved, and the cost price is how much? Rupees 750. And sold it means selling price for rupees 875. Find his gain percent, matlab profit percent. So definitely there is some profit, right? Shubh, what is the formula for profit? SP माइनस CP. ये फॉर्मूले लर्न करो, 50 बार लिखो, 100 बार लिखो. फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे 0 मार्क्स है, ठीक है. SP माइनस CP 875 माइनस 750 दैट इज रुपीज 125. सो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. प्रॉफिट कितना है? 125. CP कितना है? 750 इंटू 100. ठीक है. 0 0 cut. 25 threes are 25 fives are, we cannot cut anything further, so this will be 50 by 3, which is 16 1 by 16 2 by 3 percentage. So profit percent is 16 2 by 3 percentage, so 16.66 percentage. Please note it down. I'll just check the answer. 16 2 by 3 is correct. Okay, this was simple one, pretty simple. Let's go to the next question. Rahul purchased a table for rupees 1260. Purchased means he paid some cost price, rupees 1260. And due to some scratches on its top, he had to sell it for rupees 1197. So selling price is rupees 1197. Find his loss percent. Here you have to first find the loss because there is some loss happening, okay? And the formula for loss is CP minus SP. And for loss percent, you have to use the formula loss upon CP into 100. Please find the loss, then the loss percent. I'll give you 2 minutes. First tell me what was the loss? Loss is 63. Rupees 63. Okay. And what is the loss percent?
Okay, let's check. Very good. Let's go to the next question. Okay, overheads. Now, this is something new. Understand this. What is the concept of overheads? Sometimes, after purchasing an article, we have to pay some more money for things like transportation, labor charges, repairing charges, local taxes, etc. These extra expenses are called overheads. For calculating the total cost price, we just add the overheads to the purchase price. Right? So what we have to do, we have to add the overheads to find the total cost price. Okay, I'll give you an example here. There is an example. Calculation will be done by you, so be ready for it. Write with me, do the calculations when indicated. Okay, Mohan Lal purchased an old scooter for rupees 12,000. So that is purchase price. You can call it cost price, no problem. Purchase price, rupees 12,000. And spent rupees 2,850 on its overhauling. That is overheads, extra expense. How much? 2850. So without thinking further, you can find total CP. That is 12,000 plus 2850. Now if you add it, you get 14,850 rupees. Okay, so this is total cost price. Now he sold this scooty to his friend Sohan Beer, okay, for rupees 13,860. How much percent did he gain or lose? First tell me whether there will be a gain or loss. Yes, tell me anyone. Yes, absolutely. Cost price is more than the selling price, so there will be a loss. So first we will find the loss. Loss will be CP minus SP. And then similarly, similar to the last question, we'll find loss percent. The formula for loss percent is loss upon CP into 100. Please find both of them and let me know. Yes, please. Tell me what is loss. Okay, and what is the loss percent? 62 by 3%. Okay, let us check. Loss is 990, loss percent is 62 by 3. Very good. Okay, next question. Raghu bought an Almira for rupees 6250. Bought means cost price. Rupees 6250 and spent rupees 375 on its repairs. Overheads. Rupees 375. So we can find the total CP. Total CP will be
6625. Please confirm whether I'm correct or wrong. Okay, so this is total CP, and he sold it for rupees 6890. 6890. Find his gain or loss percent. So definitely there is a profit. Do you see that? Profit is SP minus CP. SP is greater than CP, na? So we'll find it first. How much is the profit? 6890 minus 6250. Oh, sorry, 6625. 6625. So this will be 5. This will be 8 minus 2, 6. This will be 2. 265 rupees is the profit. So we can find the profit percent. Profit upon CP into 100. Here the CP will be total CP. 265 upon 6625 into 100. Okay. Many people have issues with calculations. So for them, I'm just going to simplify this. I'll cut it with 5. 5. I'm okay. वायरल इसलिए कोई आया नहीं है, सब लोग घर पे। हाँ, थोड़ा बहुत गोवा अच्छा लगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। यस, I also have viral. Oh yeah man, it's in the air. मिलते हैं बाद में हम लोग। आपको भी। Okay, 5 5s are 25. 5 3s are 15. Okay, so this 553s are 265. 5 13s are 65. 5 2s are 10 and 5 5s are. Hey, can we cut 53 and 1325? Like, is it divisible? I don't know, maybe it is. Who knows? 53 1325. 53. 53 twos are 106. So this will be 28, 285. Does 285 comes in the table of 53? 53 6 are? No. 53 5s are? How much is 53 5s are? 565? Sorry, 265, right? है ना? So this does not cut actually. तो ये क्या है यार, ये तो फंस गए यहाँ पे, मिक्स फ्रैक्शन की तरफ जा रही है। 5 20s are 5 20s are 5 2s are 10. 5 2s are 10. 3 5 6 are 32 265. ए आ गया ना, वो तो था फिर डिविजिबल। हम लोग क्या कर रहे थे, हुआ नहीं। 53 5s are 265 and 5 4s are 20. हमारी गलती थी। 4%। प्रॉफिट 4% है। मुझे तो 4% आ रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, बट हो गया फिर 4%। यस। सो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखो यार, कटिंग में ये तुम्हारे टेबल्स ये सब अच्छा होना चाहिए। और मैं जैसे ओरल कर रहा हूँ कटिंग, तुमसे नहीं होता है, तुम डिवाइड करके करो, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से करो, बट हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं।
A vendor bought oranges at 20 for rupees 25 for rupees 125 and sold them at rupees 90 per dozen. Find his gain or loss percent. A vendor bought oranges at 20 for rupees 125. इसका मतलब पता है? He got 20 oranges for rupees 125. At 20 for rupees 125 का मीनिंग है द कॉस्ट प्राइस ऑफ, अच्छा ये बॉट है, इसके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस. प्लीज ये स्टेटमेंट लिखो मेरे साथ. कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस. दिस इज सॉल्व एग्जांपल नंबर 5. कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस इज इक्वल टू rupees 125. Cost price of 20 oranges is equal to 125. Therefore, cost price of one orange is equal to how much? यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं ना, राइट? नंबर ऑफ ऑरेंजेस कम हो गए तो कॉस्ट प्राइस भी कम हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? इट विल बी 125 डिवाइडेड बाय 20. So 5 4s are 5, 25s are 25 divided by 4 is 12.5 का half, that is 6.25. एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस आ गई एंड सोल्ड देम एट रुपीज 90 पर डजन. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस, 1 डजन मतलब 12 ऑरेंजेस, इज इक्वल टू रुपीज 90. So therefore, selling price of one orange is equal to how much? So selling price of one orange will be 90 divided by 12. Okay. This will be 2 6 are 2 45s are 3 2s are 3 15s are rupees 7.5. तो मैंने क्या किया पता है यहाँ पे? I calculated the cost price and selling price of one orange. मैंने एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल दिया. अब मैं इजीली प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकता हूं. बट व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ प्रॉफिट और लॉस? कॉस्ट प्राइस इज 6.25, सेलिंग प्राइस इज 7.5. यस, इट इज अ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट पहले निकालेंगे. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. That is 7.5 minus 6.25. That is 0.75. Right? 0.75 सही है ना? नहीं 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 नहीं, गलत है. 1.25. Yeah, 1.25. Yes. So what will be the profit percent? Profit upon CP into 100. That is 1.25 upon CP 6.25 into 100. जब भी ऐसा कुछ आता है, be very careful. You can do it easily, but be careful. तो क्या करो तुम, पहले इसको कन्वर्ट करो 125 अपॉन 625 इंटू 100 एज इट इज लिख दो. दोनों से ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से दो दो डेसिमल प्लेस मैंने शिफ्ट कर दिया. So 125 5s are 625 and 5 20s are 100. So profit percent is how much? 20%. 20% profit percent in the whole transaction. ठीक है, 5 हो गया.
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. If the cost price of 10 greeting cards is equal to the selling price of 8 greeting cards, find the gain or loss percent. ओके, हमें क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स. देखो मैं क्या लिख रहा हूं. लेट, प्लीज नोट इट डाउन विथ मी. लेट द कॉस्ट प्राइस of 10 cards be rupees X. Therefore, cost price of one card is equal to X by 10 rupees. एक कार्ड का कॉस्ट प्राइस मिल गया. ऑल्सो selling price of 8 cards is equal to rupees X. Therefore, selling price of one card is equal to rupees X by 8. ठीक है, एक कार्ड का कॉस्ट, आई एम सॉरी, 10 कार्ड्स का कॉस्ट प्राइस X लिया, और मुझे पता है कि 10 कार्ड्स का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कार्ड्स जितना है. ठीक है, सो 8 कार्ड्स का सेलिंग प्राइस भी X होगा. सो उससे मैंने क्या किया, आई फाउंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कार्ड एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन कार्ड which is X by 8. Now I would like to ask you whether there is gain or loss. Who can tell me? Who can tell me whether there is gain or loss? Yes, Tanish. You think there is gain or loss? Tanush says gain. What about others? Siddharth? Sir, I guess gain. Okay, Rashi also says gain. So it's gain, I guess. गेस क्यों होता है इसमें? मैथ्स में थोड़ी गेस होता है. 2 2 सा कितना होता है? आई गेस 4. आई गेस थोड़ी होता है 4. No, sir. In the sense, the CP's answer is answer out of 10 parts, while in SP it's the answer out of 8 parts. You are absolutely correct, and there is a very common sense behind this. I have CP as X by 8 and SP as X by 8 and CP as X by 10. This is your SP and this is your CP. Which is greater? तुम्हें guess नहीं करना है, तुम्हें पता होना चाहिए. फ्रैक्शंस के बारे में तुम्हें नॉलेज है ऑलरेडी. जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है. सो दिस फ्रैक्शन इज स्मॉलर, दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर. कुछ समझ में आया? याद आया कुछ? न्यूमरेटर दोनों में x है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा है, उसकी वैल्यू कम है. सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. उसको नोट करो तुम, ये भूलो मत, इसको गैस नहीं करना है. सो सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. Profit is equal to SP minus CP. SP is X. SP is X by 8 minus CP is X by 10. 8 5s are 10 4s are 5x minus 4x by 40. That is X by 40. This is my profit. Now, how do I find profit percent from this value of X? Are you guys noting down? कुछ लोग मुझे ऐसे ही बैठे हुए दिख रहे हैं. प्लीज नोट करो, नहीं तो ये रह जाएगा, फिर होमवर्क में दूंगा, फिर तुम मुझे डाउट पूछते रहोगे.
So profit percent is equal to profit upon CP times 100. So profit is X by 40. CP, cost price, is X by 10 into 100. And this is really crucial. ये सबके बस की बात नहीं है सॉल्व करना. अगर इसको नहीं ठीक से किया तो गलत हो जाएगा. So please understand कि ये 40 यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई होगा और ये 10 जाके यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा. सो ये हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाय 40x इंटू 100. अब क्या कट होगा? x कट होगा, 0 0 कट होगा और 4 कट होगा 100 के साथ एंड विल गेट 25. सो प्रॉफिट परसेंट इज 25%. प्लीज नोट दिस डाउन. This is profit percent of 25% in this whole transaction. Done? Look at this one. By selling 33 meter of cloth, a draper loses an amount equal to the selling price of 3 meter of cloth. Find his gain or loss percent. अरे यहाँ पे बोल दिया है loses तो फिर loss percent ही होगा ना. Why they are saying? फालतू में कंफ्यूज कर रहा है. देखो क्लियरली बोला है, by selling 33 meter of cloth, a draper loses an amount equal to the selling price of 3 meter of cloth. देखो हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी तो वैल्यू हमें x के टर्म्स में लेनी पड़ेगी. सो हम लोग लेते हैं, लेट से लेट द सेलिंग प्राइस, प्लीज नोट इट डाउन, let the selling price, Shubh, Tanush, please keep your camera on. Let the selling price of 1 meter of cloth let the selling price of 1 meter of cloth be rupees X. ठीक है? Therefore selling price of 3 meter of cloth कितना होगा? कौन बताएगा? Unmute and answer please. If selling price of 1 meter of cloth is X, selling price of 3 meter of cloth will be हाँ कम हो जाएगी प्राइस 3x, 3 टाइम्स बढ़ जाएगी प्राइस. ठीक है? एंड देयरफॉर सेलिंग प्राइस of 33 meter of cloth, चलो और इजी, अगर 1 मीटर की सेलिंग प्राइस x है तो 33 मीटर्स की कितनी हो जाएगी? 33x बढ़ जाएगी ना कॉस्ट प्राइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ एंड द सेलिंग प्राइस. ओके, सो ये रिलेशन जो मैंने लिखा है ना, इससे हमें कुछ चीजें पता चल गई है. एक तो आई हैव गॉट टू नो द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ which is the loss, and I have got to know the selling price of 33 meter of cloth
which is the selling price. So selling price हो जाएगी 33x और लॉस हो जाएगा 3x. लॉस का फॉर्मूला क्या है? CP minus SP. Loss is 3x. CP I don't know. Selling price is 33x. तो CP कितना हो जाएगा? 3x plus 33x, which is 36x. I got the CP, cost price. How did I get the cost price? Just check this. They have already told in the question that Draper loses an amount equal to selling price of 3 meter of cloth. मतलब लॉस हो जाएगा 3x selling price of 3 meter of cloth. कब होता है ये? when he is selling 33 meter of cloth. So this will be your selling price. ये हो जाएगा selling price और ये हो जाएगा loss. And from the formula of loss is equal to CP minus SP, I have got the cost price 36x. Now I can find the loss percent. So loss percent formula, loss percent, loss upon CP into 100. Loss is 3x, CP 36x into 100. X cancel, 3 12s are 4 3s are 4 25s are. So that is 25 by 3, 8 1 by 3 percentage. This is the loss. That's the loss. हम लोग ने बहुत अलग तरीके से किया. My method is more easier. I can say that. I can check the answer first before commenting. Yes, it is correct. So this method which I have done is more easier. You guys should note this down. Whenever you get these kind of questions in the exercise, I want you to follow my method. Because what I'm doing is I'm giving you methods which are easier for me, and I'm sure that will be easier for you also. I only teach those things which are easier for me to understand. I don't just follow textbook. Okay, I've done 7 questions. I have no more energy to finish more. There are still around 10 questions remaining. 10 11. It's a big chapter. What to do? Nice. So I think from example number 8 we are going to do it from tomorrow. Okay. Tomorrow we'll finish it. And homework, is there any homework? That's a question. If that's a question, then no, I'm not giving homework. Prepare for percentage test is more important, which is tomorrow, and then tomorrow I'll give you homework also for next week. Okay, great. Chalo, start practicing percentage and do well in tomorrow's test. Bye, take care. Sir, Yes.